Morning to all of you students. Today we will study some definitions and some results. So first definition is idempotent. So an element x in a ring R is called idempotent if x square is equal to x. So for all x in R. So means एक element x को हम किसी ring R में उसको हम idempotent कब कहेंगे, अगर क्या हो, अगर उसका हम square ले और वो किसके equal आ जाए, वो element itself के equal आ जाए. So means x square किसके equal आना चाहिए, x के equal आए. और फॉर ऑल x इन R. सो जैसे ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है. दिस इज द मैट्रिक्स रिंग ऑफ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. सो यहाँ पे अगर हम a का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा a के इक्वल आएगा. सिमिलरली b का स्क्वायर करेंगे वो भी b के इक्वल आएगा. और ये जो दो रिंग्स हैं ये इनमें हर एक एलिमेंट जो है दैट इज आइडेम्पोटेंट. सो नेक्स्ट इज द बुलियन रिंग. सो a ring R is called Boolean ring if every element of R is idempotent. So means हम किसी रिंग को Boolean ring कब कहेंगे कि अगर उसका हर एक एलिमेंट जो होगा वो आइडेम्पोटेंट होगा. दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आएगा. नोट दैट Boolean ring is commutative ring but converse need not be true. So जैसे हम बोलेंगे जो Boolean ring means कि उसमें idempotent प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर हर एक एलिमेंट के लिए. So ये जो Boolean ring है ये commutative ring हो सकता है मगर कन्वर्स जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो. सो फॉर एग्जाम्पल रिंग ऑफ इंटीजर्स अगर हम देखेंगे कम्यूटेटिव रिंग तो है मगर ये Boolean ring नहीं है. Next is the unity definition. So let R be a ring with identity that is 1 and this 1 is not equal to 0. So then an element U in R is called a unit, or we can say invertible if there exists an element V in R such that UV is equal to 1 and which is equal to VU, and then V is called the inverse of U and it is denoted by U inverse. So next is the remark that unity must be unit but every unit is not unity. So means unity unit हो सकता है मगर हर एक unit unity नहीं होगा. For example ring of integers की बात करेंगे तो इसका जो unity है that is 1 मगर इसके जो units है वो 1 और -1 है. Similarly next definition है nilpotent की. So an element x in a ring R is called nilpotent if it satisfies the property that is xn is equal to 0 for some positive integer n. So means अगर xn equal to 0 होगा for some integer n then we can say that element x in the R is the nilpotent. Similarly next is degree of nilpotency. So the smallest positive integer for x with above property that is x raised power n equal to 0 is called the degree of the nilpotency of the element x. So ये कुछ definitions थी. So अब हम एक article करते हैं. First article है prove that the sum of two nilpotents of a commutative ring is also nilpotent. So हमारे पास क्या given है, हमारे पास ring commutative ring है. So I will write here let R be a commutative ring and A and B belongs to R, be nilpotent elements such that अब nilpotent की प्रॉपर्टी है दैट इज a रेज पावर n या x रेज पावर n इक्वल टू 0 होगा. अब यहाँ पे एलिमेंट हम nilpotent a और b ले रहे हैं तो आई विल राइट a रेज पावर m इज इक्वल टू 0 एंड b रेज पावर n इज इक्वल टू 0 फॉर सम इंटीजर्स n and m. फॉर सम इंटीजर्स m and n. सो नाउ हमें क्या शो करना है कि दैट सम ऑफ टू nilpotent. सो मीन्स सम ऑफ टू nilpotents हो गया. a और b का जो सम होगा दैट इज m प्लस n रेजिंग पावर m प्लस n. सो दिस ऑफ टू nilpotents ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज ऑल्सो nilpotent. तो हमें ये भी शो करना है कि इन दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, nilpotent के इक्वल आएगा. सो मीन्स ये किसके इक्वल आना चाहिए, a प्लस बी होल रेज पावर m प्लस n जो है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, हमें 0 के इक्वल आनी चाहिए. ओके सो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं बाई कम्बिनेशन. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट दैट इज a रेज पावर m प्लस n देन प्लस सेकेंड एलिमेंट आएगा दैट इज c1 कम्बिनेशन है ये m प्लस n
इंटू ए रेज पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू b हमारा आएगा। इसी तरीके से दूसरा पार्ट, एंड हमारे पास m प्लस n इंटू सी आर, देन ए रेज पावर m प्लस n माइनस 1 इंटू बी रेज पावर r प्लस सो ऑन एंड अप टू, ये सीरीज है हमारे पास, प्लस सो ऑन बी रेज पावर m प्लस n। ओके, ये हमारे पास इसका कॉम्बिनेशन से मैंने इसको ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको फर्दर इसको ब्रेक करेंगे। a रेज पावर m जो है वो यहाँ पे सबसे इसमें से कॉमन आ जाएगा, सेम b रेज पावर n दूसरे से हमारे को कॉमन आ जाएगा। सो देखें, so this implies, or we can write a plus b whole raised power m plus n. So this is equal to, equation थी हमारे पास a raised power m plus n, then plus m plus n, ये combination लगाया है यहाँ पे। so ये आ जाएगा a plus m minus 1 into b plus so on, then it is a c r, then it is m plus n, then a raised power m plus n minus 1 into b raised power r plus so on up to b raising power m plus n. so अब हम इसमें से देखें, a raised power m कॉमन आ जाएगा, तो I will take a raised power m कॉमन। so ब्रैकेट में आ जाएगा a raised power n, then plus m plus n, then c1, then a raised power n minus 1, then b plus so on अप टू, ये आ जाएगा हमारे पास सी एन, दिस इज m प्लस n एंड b रेज पावर n। सिमिलरली प्लस सेकेंड पार्ट, दैट इज m प्लस n, देन c n प्लस 1, देन a रेज पावर m माइनस 1 इंटू b प्लस सो ऑन अप टू b रेज पावर m, एंड यहाँ से हमने बी एन कॉमन ले लिया। ठीक है, सो ये सीरीज है, मीन्स इसमें आर का टर्म भी होगा, देन एन का टर्म भी होगा, एंड एन प्लस 1 का टर्म भी होगा, एन प्लस 2 का टर्म भी होगा अप टू एम तक। सो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से अब डायरेक्टली हमें गिवन है कि दैट ए रेज पावर जो एम होगा वो भी 0 है, एंड बी रेज पावर एम भी है वो 0, क्योंकि ये दोनों निलपोटेंट्स है। सो हम इस इक्वेशन में वापस इसको पुट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, इसको पूरे को अगर मल्टीपल ए रेज पावर एम 0 हो गया तो मीन्स दिस इंटू ये होल टर्म 0 हो जाएगा। सो और ये वाला टर्म भी क्या आ जाएगा, बी रेज बाय एन भी है तो ये भी टर्म 0 हो जाएगा। सो डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ गई। सो देयरफॉर वी कैन राइट, और वी कैन से दिस इंप्लाइज a प्लस बी होल रेजिंग पावर m प्लस n, दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस शोज दैट, और दिस शोज दैट a plus b is a nilpotent, is also nilpotent, hence proved. Next example is that show that in a ring R a non-zero idempotent cannot be a nilpotent. So हमें ये show करना है। So सबसे पहले हम एक element ले लेते हैं। So let X be a non-zero idempotent element of R. Idempotent element of this ring R. सो आइडेम्पोटेंट का मीन्स दैट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के इक्वल आना चाहिए। ओके, सो इफ एक्स इज ऑल्सो निलपोटेंट, अगर एक्स क्या होगा, निलपोटेंट भी होगा। सो निलपोटेंट एलिमेंट, सो देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर n greater than equal to 1 such that x raised power n, this is equal to 0. Okay, so name it as equation number 1. So but we have x square is equal to x, so this implies x cube is equal to x square into x, but x square is x, so this goes to x into x. So this is again x square, and x square is equal to x because it is also idempotent. So from here x raised power 4, this is equal to x square into x square. So this goes to x into x, and this is x square, and again we get x. So inductively we get
x raised power n, this is also equal to x. So this implies x is equal to 0, which from equation first I will write here, since of first. So because xn is 0 from equation first, so I will put the value of xn here. So we get x is equal to 0. So which is a contradiction? Which is a contradiction because x is a non-zero, because x is non-zero, because we have taken here that x is the non-zero idempotent element of ring R. So hence a non-zero idempotent cannot be nilpotent. Hence proved. Thank you.